In this video, we are going to solve some important problems, different kind of problems which are related to projectile motion. So the very first one is here a projectile motion is given, okay, which has been thrown at 60 degree, and at the velocity, the speed given to this is 147 meter per second. Okay, so let's draw a figure for this. So projectile motion always start with the problem by drawing a figure. So if you're not memorizing the formulas, which I'll not recommend to, do not memorize the formula, always draw it and then solve it. This will minimize the silly mistakes which generally people do in paper. So एक बार प्रॉब्लम को दोबारा देख लेते हैं. एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें थीटा 60 डिग्री दिया है, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है. यहाँ पे u 147 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और पूछ ये रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन. तो ये जो झुकाव है, जो एंगल है, ये 45 डिग्री हो जाएगा. सो व्हेन दिस एंगल विथ थीटा will become 45 degree. Okay, this is the time we have to find. Okay, so let's see. Let's resolve it into two motion. One, horizontal motion, which is of constant velocity motion. क्या है? U है u cos theta. U horizontal क्या होने वाला है? U cos theta होने वाला है. U cos 60 which is 147/2. ये चेंज नहीं होगा कभी भी. ठीक है. अब जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है उसको भी निकाल लेते हैं. u साइन थीटा होगा, ये 147 रूट 3/2, 60 साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, क्योंकि ठीक है. ये दो चीज़ें रिजॉल्व कर ली हमने गिवन से. अब जो निकालना है उसी में एक हिंट दिया हुआ है. So the hint is given here that what will be the time after which the horizontal velocity, so the angle which is going to make it from horizontal is 45 degree, right? So when it is going to make 45 degree, the angle, so this velocity is going to be u cos theta, 147/2 ही होने वाला मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये जो हमारा y जो एक्सेस, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है y डायरेक्शन में, उसको x डायरेक्शन के वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा, ताकि ये 45 डिग्री पे तभी तो 45 डिग्री होगा ना. जब 45 डिग्री होता है तो बेस और जो x एक्सेस पे वैल्यू होता है y एक्सेस दोनों इक्वल होता है. सो व्हेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल speed will be equal, then the velocity will make 45 degree with the horizontal. ये clear है? I hope this is clear. If it is not, feel free to write the queries on Equation group and we will resolve it. We'll give further attention to this. Okay. So this so horizontal. So now we know what will be the value of vertical velocity, right? So vertical final velocity is equal to uv minus u vertical initial vertical velocity minus gt. ये सिंपल लीनियर मोशन वाले फॉर्मूले से आ गया, और ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगा, तभी ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी उतना ही होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जा रहा है ना. सो नाउ वी नो द इक्वेशन, फाइन, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, व्हिच इज दिस. A very straightforward question, nothing to be confused about this. If you have any question, feel free to ask it in Equation group. Fine. Let's move to the next question. Next question looks a bit bigger, but again this is also very simple. Okay, so here if you see, it has been given that the initial velocity which has given to projectile is this 37 meter per second, angle is 53 degree. Now what it is asking is find the position of the ball and the magnitude and direction of its velocity after t equal to 2 seconds. Very simple. We have to solve the horizontal motion for 2 seconds and vertical motion for 2 seconds. Fine. So x is equal to v naught t, because this velocity in x direction is going to be constant. This, okay, this will be the what? So let's resolve the velocity first. v0x, v0y, 22.3 meter per second, 29.5 meter per second. Then
We know how to solve the equation in x-axis and y-axis. Take t, okay? Very simple and very straight. So once if you will start analyzing the projectile motion in is as a as a product of two motion, one in horizontal axis, which is a constant velocity motion, one in vertical axis, which is a constant acceleration motion. It will solve all of your problem. Okay, what is the second part saying? Find the time when the ball reaches the highest point of flight and find its height h. टाइम निकालने के लिए बहुत ही आसान है. उस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा, है ना? अगर तुम देखो उस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा. इससे टाइम पता चल जाएगा. और अगर ये टाइम पता चल गया तो इसी से हाइट भी निकाल सकते हैं हम लोग. इस मोशन को अगर हम लोग एकदम सिंपल स्ट्रेट मोशन लें तो उसी से हाइट निकाल लेंगे. एच जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है हम लोगों को, v0y पता है, t1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, इससे हम लोगों को सीधा सिंपल सा हाइट मिल जाएगा. तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड दी हॉरिजॉन्टल रेंज आर, दैट इज the horizontal distance from the starting point to that which the ball hits the ground. रेंज निकालना है हम लोगों को. ठीक है, इसके लिए एस वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो कर देते हैं, एच को ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो उससे हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा और उससे रेंज निकल जाएगा. तो बहुत ही सिंपल होता है वंस इफ यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग इट इनटू टू मोशंस. फाइन, let's do a third problem. The third problem, I will not show you the solution of it. Okay, आप लोगों को खुद से बनाना है ये, बट मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा इसमें. ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन है. इसमें ग्राउंड से बॉल को नहीं फेंक रहे हैं, इसमें 50 मीटर हाइट से बॉल को फेंक रहे हैं और 37 डिग्री पे ये फेंक रहे हैं इसको. अब जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो लिया था, इसमें हम लोग -10 लेंगे. अभी भी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला सेम रहेगा. यहाँ से मोशन को एनालाइज करना शुरू करेंगे जहाँ से लॉन्च किया है, और वर्टिकल वेलोसिटी जहाँ ज़ीरो हो रहा है वो हाइट निकालेंगे इसके रेफरेंस में, उसमें फिर 50 जोड़ेंगे तो मैक्सिमम हाइट निकलेगा हम लोगों का वेलोसिटी. बाकी सब कुछ बहुत ही सेम रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा. आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर अटेम्प्ट करिए और अपना सॉल्यूशन ग्रुप पे भेजिए. ठीक है, फीड में पोस्ट करिए और इसको हम लोग फर्दर एनालाइज करेंगे. विथ दिस वी हैव कवर्ड two major types of problems in projectile. One which is launched from ground, the other where we have launched it from a certain height. Okay, the very third kind of problem is जब wedge पे हम लोग projectile motion को analyze करते हैं. Okay, so these three kinds of problem is there. The very third kind of problem we'll see it in a next video. Fine. But this is quite simple. I hope you are getting it. If you are not, feel free to contact us. Okay? Thank you so much.